नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपदे। नमस्कार वडीलो, मित्रों, बाळको, विद्यार्थियों, वेलकम to my YouTube channel ashishsirAshish. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. This is episode number 52, Balakanda, सर्ग नंबर 76, 76वां सर्ग, षट्सप्ततितम सर्गः। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं लेके भगवान श्री राम का राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 76वां सर्ग। श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तप प्राप्त पुण्यलोक का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना। Hitting the arrow to the bow of Lord Vishnu and declaring it as unfailing, Sri Ram asked Parshuram to point out at whom it may be discharged, and at the instance of the latter puts an end to his title to the eternal word entered by him through his estates. Recognize Sri Ram to be no other than Lord Vishnu, and taking leave of him, Parshuram withdraws of Mount Mahendra in order to resume his estates. दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, हे भृगुनंदन ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से ऋण होने की, पिता के मारने वालों का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय असंहार रूपी कर्म किया है, उससे मैंने सुना है और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही है। Hearing the challenge of Jamadagni, son Sri Ram, son of Dashrath, of course, who remained tongue-tied on that occasion out to regard for his father, now spoke to Parshuram as follows. I have heard, O season of Bhrigu, of the work that you have done, intent on repaying the debt you own to your father by avenging his death. We approved of it, O holy Brahmana. भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। Since however you despise me, devoted as I am to the duty of the Kshatriya, and therefore chary of speech in the presence of the holy Brahmana like you, as a powerless, as though lacking in variety, O season of Bhrigu, pray witness my glory and prowess today. ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी से हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। Saying so and growing indignant
Sri Ram, O season of Raghu, O swift prowess, seized the excellent weapon bow as well as the arrow from his hand, and further withdraw the divine energy of Parshuram, a season of sage Bhrigu. We read in the Padma Puran, saying so Sri Ram seized in sport, yet with modesty, the bow of Lord Vishnu, along with the divine energy of the same Lord that had existed in him so far, O Parvati. This is also borne out by verse 11 of this very Canto. उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम से इस प्रकार कहा, हे भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इस सब कारणों से मैं इस प्राण सहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता हूँ। Stringing the bow, celebrated Sri Ram set the arrow to the string, so the tradition goes. Getting angry, Sri Ram then spoke to Parshuram, son of Jamadagni, as follow: You are worthy of respect to me in that you are a Brahmana, as also because of your worship with Vishwamitra. Kinship. Who is the maternal uncle of your father? Therefore I dare not hurl the deadly arrow at you, O Rama. राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्यलोक को प्राप्त किया है, उन्हीं को नष्ट कर डालो, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण, जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता है। I shall as alternative take away, O Ram, your present capacity of unobstructed movement in all the three worlds, or put an end to your title to the peerless eternal world, duly acquired by dint of asceticism. Such is my mind. This transcendent arrow of Lord Vishnu, capable as it is of reducing the stronghold of an enemy and crushing the might as well as the pride of adversary by its unique power, never goes without hitting its mark. उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ एकत्र हो गए। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस, नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहाँ आ पहुँचे। Placing Brahma, the progenitor of the entire creation, at their head, all the gods, accompanied by hosts of rishis, assembled there in their aerial cars in order to behold Sri Ram wielding the superb weapon of the Lord Vishnu. Gandharva and the celestial dancing girls, as well as the Siddhas, Charanas and Kinnaras, as also Yaksha, Ogres and Nagas, too collected there in order to witness that great marvel. जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीर्यहीन हुए जमदग्नि कुमार राम से दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेज निकल जाने से वीर्यहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे से कहा,
हे रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। People gathered there, having been stunned at the time with the fear of the dire consequences that might follow from the show of valor on the part of the Sri Ram when Sri Ram took up the superb bow of Lord Vishnu. The celebrated Parshuram, son of Jamadagni, now rendered powerless, looked with wonder at Sri Ram. Dazed by the brilliance of Sri Ram due to his having been rendered powerless, the son of Jamadagni spoke in a low tone as follows to Sri Ram, whose eyes resembled the petal of a lotus. When in the past the dominion of the earth was bestowed by me on sage Kashyap spoke to me as follows: you must no longer inhabit my dominion. खकुत्स कुलनंदन तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करते हुए मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप जी के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा रखी है। Enjoined thus and obeying the command of my preceptor Kashyap, I do not remain on the earth at night from that time onward. In as much as a pledge has been taken by me to that effect before Kashyap, which is a well-known fact, O Ram. इसलिए वीर राघव, आप मेरे इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक पर श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा, परंतु श्री राम, मैंने अपने तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दे। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। Be pleased therefore, O heroic season of Raghu, not to put an end to my present unhampered movement in all the three worlds. I shall retire to Mount Mahendra, the foremost of the mountain, with a speed of thought. Fearless worlds have actually been earned by me by dint of the asceticism. O Ram, put an end to my title to them by means of your superb shaft. Let there be no loss of time. शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। From the fact of your having not only seized but also strung and down this bow of Lord Vishnu, which could be strung by none else, I conclude you to be no other than the impressible Lord Vishnu, the Caesarean Lord of gods, the slayer of the demons Madhu. Let everything be well with you, O chastity of foes. All these hosts of the gods gathered together here for are looking at you, whose deeds are incomparable and who are unrivaled in combat. खकुत्स कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई है,
यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती है, क्योंकि आप त्रिलोकनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। The powerlessness of mine is your presence, O season of Kakutsa, cannot be a matter of shame to me, since I stand worsted by none else than the Lord of all the three worlds. उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। Be pleased, O Ram of noble bows, to discharge your matchless arrow. On your having discharged the arrow, I shall return to Mount Mahendra, the foremost of the mountains. जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्रीमान रामचंद्र जी ने यह वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या का उपर्जित किया हुआ पुण्यलोक को श्री रामचंद्र जी ने चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। Even while Parshuram, son of the Jamadagni, was speaking, as aforesaid, the mighty and glorious Ram, son of Dashrath, discharged the superb shaft. Finding his own prospective reliance earned by dint of the asceticism ruined by the Sri Ram, Parshuram, son of the Jamadagni, immediately returned to the Mount Mahendra, the foremost of the mountains. उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधधारी श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदाग्नि परशुराम जी का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। Thereupon all the quarters and even so the intermediate corner intervening them were rid of darkness. The gods include the host of the rishis accompanying them glorified Sri Ram, who stood with the uplifted bow, having walked clockwise round Sri Ram, son of the Dashrath, the mighty Parshuram, son of the Jamadagni, highly honored by the Sri Ram, then retired to his own abode of Mount Mahendra. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट्सप्ततितम सर्गः समाप्त. Thus the end of Canto 76 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम. और बालकांड का आखिरी सर्ग नंबर 77 77, और आज बालकांड समाप्त होगा कल से। अयोध्या कांड शुरू होगा, वहीं से पूरी ओरिजिनल रामायण शुरू होती है। 77वां सर्ग राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना, श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम। On the departure of Parshuram, Sri Ram hands over the bow of Lord Vishnu to Varuna, the god of water, and sending his army ahead, King Dashrath enters Ayodhya. After some days, Prince Yudhajit, Bharat's maternal uncle, takes away Bharat and the Shatrugna to his father's capitals. जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांत चित होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके श्री रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, पिताजी, जमदाग्नि कुमार परशुराम जी चले गए हैं। अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगिणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। परशुराम, having left
The highly illustrious Sri Ram, son of Dasrath, whose mind was completely at the rest, made over a trust the bow in his hand to the Varuna, the god of water of immeasurable strength. Greeting the sage headed by Vasishtha and seeing his father, who had apparently failed to notice the discomfort, compute and depart of Parsuram, perturbed over the menacing attitude of Parsuram, Sri Ram, a season of Raghu, then submitted to his father as follows: Parsuram, son of Jabnagni, has departed. Let the army consisting of 4 limbs like elephant, chariots, horsemen, and the foot soldier, and the protected by you it is master. Therefore, march in the direction of Ayodhya. श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म माना। Hearing the request of Sri Ram, King Dasrath closely folded in his arms his son, the foremost of Raghu race, and smelt his head as a gesture of affection. Delighted, nay, overjoyed to hear that Parshuram had already left the king through his son as well as himself reborn on that occasion. तदंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहाँ से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। उस समय उस पुरी में सब और ध्वजा पताकाएँ फहरा रही थी। सजावट से नगरी की रमणीयता बढ़ रही थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखरे गए थे। पूर्ववासी मनुष्य हाथ में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सब से भरी पुरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया और नगर को तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की। अपने कांतिमान पुत्र के साथ महायशस्वी श्री राम श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। He urged his army forward and then speedily reached his delightful capital. The king presently entered in the city decorated with flags and buntings and rendered noisy by fanfare of trumpeters. It looked charming, with his highways sprinkled with water, and was strewn with heaps of the flowers. It was brimful with the citizens with their faces blooming over the return of their king and carrying auspicious articles in their hands, and was fully graced with multitudes of men met far in advance by the citizen as well as by the brahmanas inhabiting the capital, and followed by glorious sons, his glorious sons. The glorious and highly illustrious king now entered his beloved place, weighing with the Himalaya mountain in width and height. अपने कांतिमान पुत्र के साथ राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया।
महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकई तथा जो अन्य राजपत्नियां थीं वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गई। तदंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले गई। वे प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। उन सब ने देव मंदिर में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदंतर नववधु रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्र के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकई कुमार भरत से कहा, बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकई राज वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। Duly entertained with the luxurious by his own people, the king rejoiced at his house. Kausalya and Sumitra, as well as the graceful Kaikai and the whatever other queens there were, bused themselves with the ceremonious reception of their daughter-in-law. Thereupon, in the queens conducted into the gymnasium, the highly blessed Sita and the illustrious Urmila, as well as both the daughter of Kushadhwaja, Mandavi and Sutkirti, all those queens forthwith got the bride to offer worship in the temple inside as well as the outside the gymnasium. The birds who were greeted with the benediction pronounced by the priest looked splendid. After having offered oblations to the sacred fire in order to solemnize their entry into the gymnasium, and were clad in the second rows, having saluted on that occasion those who deserve to be saluted, all the princes without exception happily enjoyed life with their husband in their private apartments, duly married, and thought the use of various missiles and weapons, and endowed with the rich. The princes, who were well among the men, lived in the company of their friends and relatives, rendering service to their father. Some time after this, one day King Dashrath, the delight of the Raghu, spoke to the Bharat, the son of Kaikai, as follows. बेटा, तुम्हारे मामा कैकई राज वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए। दशरथ जी की यह बात सुनकर कैकई कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वे नरश्रेष्ठ सूरवीर भरत अपने पिता दशरथ, राजा दशरथ, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहाँ से चल दिए। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। उससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगरवासियों के सब काम करने, देखने तथा उनसे समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों की भी सिद्धि करने का ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ, वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे।
श्री राम के उत्तम शील तथा सदा सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए, ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी, क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पातिव्रात्य आदि गुण से तथा अनेक सौंदर्य गुण से भी श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीतिपात्र बनकर रहते थे। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। वे रूप में देवांगनाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। दिस सन of the king of Kaikai, the heroic Yodhajit, your maternal uncle who has come to take you to his father's capital, is staying here in the hope of being allowed to take you. Hearing his remark of Dasrath, Bharat, son of Kaikai, forthwith got ready to depart along with Shatrugna, taking leave of his father, King Dasrath, and Sri Ram, who did great things without much exertion, as well as to all his three mothers, Kausalya, Sumitra, and Kaikai. The heroic Bharat, as well among men, left with Shatrugna for the kingdom of Kaikai, highly rejoiced to get hold of Bharat along with Shatrugna. The valiant Yudhajit reached and duly entered his home, and his father felt gratified at his Bharat as well as Shatrugna having left the very mighty Ram and Lakshman began to serve their godlike father when the occasion demanded it, placing his father's command above all else. Sri Ram ever did in every way all business relating to the citizen, which was dear to them as well as conducive to their interest, doing all the work of his three mothers for their sake. Sri Ram, who was highly self-restrained, attended from time to time the important business of his elders. In this was King Dasrath, the Brahmanas, as well as the trader. In fact, all the people of the kingdom of Ayodhya were pleased with the disposition and conduct of Sri Ram. Sri Ram, who was endowed with the true unfailing valor, outshone all his brothers in the reputation, and like a Brahma, the self-born creator, excelled all created beings in merit. The high-minded Sri Ram, whose heart was set on his spouse, and who stood enthroned in her heart, enjoyed life with her for many months. Sita was dear to Sri Ram as a partner made available to him by his father, nay, because of her
manifold virtue and comeliness of form. His affection for her grew all the more. Her husband, too, because of the excellence and lovely appearance, gained a doubtly secure grip in her heart. Sita, the princess of Mithila and daughter of Janaka, who compared with her goddesses in the bodily charm and was beauty incarnate, as it were, could vividly read in minute detail with her mind even that which existed in the inmost heart of Sri Ram. United in wedlock with the foremost princess, who was the sole object of his love and whose love was centered in him, Sri Ram. The aforesaid son of King Dasarath, a royal sage, looked the most charming and full of joy, even as all-providing Vishnu, the suzerain lord of the gods, in the company of Sri Ram, of Sri, the goddess of the fortune. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्ततितम सर्गः 77वां सर्ग समाप्त. Thus the end of Canto 77 in the Balakanda of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. End of Balakanda Sampurnam. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pate. Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandrai Namah. Sri Sitaram Chandrabhyam Namah. Om Ram Ramaya Namah. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Siya Ram, Jaya Ram, Siya Ram, Jaya Siya Ram, Raghupati Raghav, Raja Ram, Patita Pavana, Sita Ram, Raghupati Raghav, Raja Ram, Patita Pavana, Sitaram. Sri Ram, Jaya Ram, Jaya Ram, 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 Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you very much. Jai Sri Ram, Jai Maharaj.